तो आज कितना डेट है? 26, 27, 27 ना? Oh, okay. So I'll just repeat it once again. Electrical force में the force was equal to charge into electrostatic field. ठीक है? Similarly, gravitational force में gravitational force is equal to mass into gravitational field. Gravitational field is Eg. This is gravitation. Yeah, suppose we have point masses A and B, such that this one is A and the other one is B. So F vector E, comma AB. AB का मतलब क्या हुआ? Force on A because of B, right? This is going to be given by, let's say, mass of A is capital M and mass of B is small m. So F AB is equal to capital M into E vector G, comma AB. Is that okay? And F vector G BA will be equal to small m into E vector G, comma BA. दोनों का मतलब क्या क्या है? F G A, comma B, sorry, F G, comma A means force on, force, gravitational force on A due to B. ठीक है? EG AB gravitational field at, no, sorry, gravitational field at A because of mass at B. F G B A force on B due to mass at A and EG vector AB, sorry, BA force, sorry, electric field, gravitational field at point B
due to mass A. I hope this part is clear to us. इसमें कोई इशू? डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या क्या रहेंगे? हाँ, ए बी पर जो लगाएगा फोर्स दैट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स ए, एंड बी ए पर जो लगाएगा दैट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स बी. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स आर गोइंग टू बी इन सेम डायरेक्शन, राइट? क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए डायरेक्शन इज गोइंग टू बी प्रिसाइजली द सेम. अब पॉइंट मासेस के लिए अगर इस चीज को कैलकुलेट करते हैं फिर इंडिपेंडेंटली हमारा कैन आई राइट ई जी ए वेक्टर इज नथिंग बट जो फोर्स है मेरा, फोर्स जी कॉमा ए बी अपॉन इसका मास करेंगे ए बी का मतलब बी ए पर जो लगा रहा है फोर्स, तो कैपिटल एम से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय हाँ हाँ ए का मास है वो, ए का मास है, और बी से ए पर कितना फोर्स कितना फील्ड अप्लाई हो रहा है, that is when I am going to divide it by mass of the force applied on the body divided by mass of the particle on which you are considering the force. That is going to give you the uh, gravitational field at that particular point on A due to B. ठीक है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. ठीक है, सो इसमें हम we are going to divide it by mass which is placed at point A. ठीक है. Similarly, EGBA vector is going to be equal to F vector G comma BA upon mass which is placed at. ठीक है, इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम? थिंक these things are very simple and almost self-explanatory. इसके लिए हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? It's going to be minus capital G capital M into small m R AB vector, right, divided by mod R AB vector Q. That is the vector form, right? Vector upon modulus. ठीक है, right? इनवर्स स्क्वायर लॉ की वजह से. यस, परफेक्ट. ठीक है, और नीचे में एक ये कैपिटल एम भी रहेगा, तो कैपिटल एम एंड कैपिटल एम विल गेट कैंसल्ड. तो फील्ड मेरा क्या हो गया फाइनली? नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ सही है. थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा था सो दैट आई कैन राइट.
over here itself. अगले पेज पर ना लेते. So this is simply going to be equal to minus g. जिस मास का फील्ड हम ढूंढ रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वही वाला मास लेंगे, उसका मास लेंगे, एंड देन आर, जिस पोजीशन का हम ढूंढ रहे हैं, जिस पोजीशन का ढूंढ रहे हैं उसका आर वेक्टर लिखेंगे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट एज द फर्स्ट मास. फर्स्ट मास विल एक्ट एज रेफरेंस पॉइंट. वहां से हम पोजीशन वेक्टर दूसरे वाले पॉइंट है जिसका भी आप देख रहे हैं, या फर्स्ट मास इज बी इन दिस केस, एंड दूसरे वाले के लिए ए विल बी द फर्स्ट. यस, उसी का उसी का फील्ड ढूंढ रहे हैं हम एट पॉइंट ए, एंड फील्ड बिकॉज ऑफ बी एट ए, राइट. ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाय इज दैट ओके. इसको बी ए कर दिया तो माइनस साइन हट जाएगा. ठीक है, यस डेफिनेटली, एंड दिस इज गोइंग टू बी रिटन एज, कहाँ पे डायरेक्शन उल्टा रहेगा, बी से ए पर, बट इट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स बी. ठीक है, और वेक्टर का मतलब बी से ए वाला डायरेक्शन. दिस इज आर बी ए वेक्टर, सॉरी आर ए बी वेक्टर. दिस इज आर ए बी वेक्टर, but force will be acting in this direction. ठीक है, I'll draw it. This is R A B vector, but force will be acting in this direction. Because of B, this is F G A B vector. Force on A because of B will be acting towards B. ठीक है, तो फील्ड का एक्सप्रेशन के बारे में एटलीस्ट फॉर पॉइंट मासेस वी बिकेम क्लियर. नेक्स्ट थिंग इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है? फील्ड और फोर्स का जो रिलेशन होता है वही पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं? वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था तो यहाँ पर यूनिट मास रहेगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन टू, सॉरी इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पोजीशन, और वो वहां उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ सम अदर mass. There is going to be a mass. तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिफाइन करते हैं टेक्निकल टर्म्स में
the force experienced by unit mass of force experienced by unit mass upon due to another in general words, gravitational field can also be explained as sphere of influence of a mass under consideration. Is that okay? The electric field होता है, that is sphere of influence of a given charge, magnetic field, magnet का, a given magnet का sphere of influence. Similarly, gravitational field is sphere of influence of uh, a given mass. It indicates sphere of influence of a given mass. Mass under consideration. ठीक है और फॉर्मूले जो है वो हमने पहले देख लिया है. So this is about gravitational field. Next term which we need to understand is gravitational potential energy and gravitational potential. So gravitational potential energy क्या होगा? Gravitational amount of work done in displacing a mass small m from infinity to five point
influence of the gravitational force. Capital. यहाँ पर स्पेसिफाइड पॉइंट में पॉइंट का नाम मेंशन कर देते हैं. पॉइंट बी under influence of gravitational force of another mass, capital M. This is referred as gravitational potential energy. This is referred as gravitational potential energy of this system of theta. So now what will be the work done? So obviously again we are going to have a mass, capital M at point A, and there is a small mass M at point B, which is almost at infinity. And this is R. Sorry, B a vector which is equal to infinity. Okay? And we are trying to bring this from here to a specified position. Let us say this point P. Okay? So it is moving from this point B to point P. This is now becoming PA vector, and this is a finite vector. Okay? क्या बेटा? P is new position. P is new position of mass small m vector influence of of gravitational force due to mass at.
क्लियर है? ये वाला इनिशियल होगी। तो अभी वर्क डन क्या होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर ऑन बी बिकॉज ऑफ ए डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम बी, सॉरी फ्रॉम ए टू बी। इज दैट ओके? ठीक है, एफ की वैल्यू रख लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी माइनस कैपिटल डी कैपिटल एम स्मॉल एम आर बी ए वेक्टर divided by mod r b a vector dot d b a, हाँ सॉरी सॉरी, d m m r b a, क्या क्या? ओके, टॉक अबाउट दिस। अब देखो एक चीज क्लियर होना चाहिए यहाँ पर हमको, ये वेक्टर और ये वेक्टर का डी आर वेक्टर जो है, ये दोनों का साइन क्या है, सॉरी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दिस इज सिंपली गोइंग टू बी व्हाट, डॉट प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी नॉर्मल आर लिख लें हम लोग, लेंथ वेक्टर, और ये नॉर्मल डी आर लिख लें, और ये भी आर क्यूब हो जाएगा, आर डी आर बाई आर क्यूब। तो आर एंड आर विल गेट कैंसल्ड, ठीक है। तो डी आर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू द फाइनाइट डिस्टेंस। तो दिस इज बेसिकली ये वेक्टर जो होगा इसका मॉड आर पी ए वेक्टर is equal to, we can say r, is that okay? और हाँ बेटा, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा ना टोटल वर्क। ये तो डिफरेंशियल वर्क डन है, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया, एंड इट हैज टू मूव फ्रॉम बी टू पी। क्या बेटा? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन को ही हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दे, दोनों का डायरेक्शन वेक्टर सेम है, तो cos थीटा 0 हो जाएगा। सो बेसिकली मॉड लेकर के हम सारी चीजों को ऑपरेट कर दे रहे हैं। वेक्टर ऑपरेशंस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, मतलब होगा लेंथी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। सारे का आईजी के कंपोनेंट लिखना होगा, फिर डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, और फिर तीनों को इंडिपेंडेंट एक्सेस पे इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, कुछ ज्यादा होता नहीं है, तो 4 स्टेप बढ़ जाएंगे। ऑपरेशंस के टाइम पर भी आपको वो 4 स्टेप बढ़ाने, अगर इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में सॉल्व, नहीं तो उसको आप स्केलर फॉर्म में ले सकते हो। बेसिकली आपका मूवमेंट जो होता है वन डायमेंशनल मूवमेंट होता है। वन डायमेंशनल क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट इज गोइंग टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, घूमेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पर मैं एक चीज करता हूँ, आई एम टेकिंग आर बी ए वेक्टर बॉन्ड इज इक्वल टू कैपिटल आर
देयरफॉर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो छोटा आर वहां पर दिया है आरपीए को, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स वगैरह जो है उनमें कैपिटल आर, कैपिटल, ठीक है। इज दिस ओके? जनरल सिंपल नोटेशन, सबके मैग्नीट्यूड्स। नाउ आई कैन प्लेस दिस ओवर टू गेट माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू आर डॉट डी आर या आर डी आर अपॉन आर क्यूब, that makes it minus em dr upon r square r. Now क्या, अब इंटीग्रेशन में p का पॉइंट है, इंटीग्रेटिंग from r is equal to infinity to r is equal to small r. अब ये रुक जाएगी, मैं कर दे, एक ही करना है ना। क्या कर दिया मैंने, क्या हुआ? नहीं, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर? यहाँ पे ना, हाँ लिखा है, किसके साथ? इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट से इनके मैग्नीट्यूड आ जा रहे हैं, उसको भी तो हटाया है ना। वही तो मैंने बोला, द डायरेक्शन ऑफ, लिख देता हूँ, नहीं तो फिर से कंफ्यूज। एज डायरेक्शन ऑफ आर डी वेक्टर एंड डी आर डी वेक्टर आर सेम, hence we can operate on their same, hence we can operate on their magnitudes after taking their dot product
इज दैट ओके? क्या बेटा? क्यों नहीं ले सकता? क्या प्रॉब्लम है? किसी भी वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। फिजिकल मीनिंग अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नया मीनिंग निकालेंगे, अगर निकल सकता है तो वी हैव सर्दी की वजह से मेरा दिमाग खराब। हाँ, मैं तो सो पाया हूँ बट वो कंटिन्यूअसली सर और ये वाला फोर्स है, ये दर्द किए जा रहा है मेडिसिन के साथ। रात को सोने के टाइम ठीक है। आई होप गो टू द गवर्नमेंट। सो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम। सो वी आर गोइंग टू हैव W is equal to minus integral G capital M small m dr upon r square from infinity to small r. ठीक है? This is going to give you minus G m m r dr r square का इंटीग्रल माइनस वन बाई आर हो जाएगा, minus 1 by r under the limits infinity to capital R. This is equal to ये वाला और ये वाला माइनस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा. It will become G M M अपॉन अपॉन में ये सिर्फ यहाँ पे 1/r माइनस 1/infinity. हम यहाँ 1/infinity is 0. ये हो गया वर्क डन एंड वर्क डन इज इक्वल टू
negative change in potential energy, right? Is that okay? This is from work energy theorem. क्या हुआ? If potential, if नहीं, it's basically potential energy at infinity is taken as a reference and hence zero. Is that okay? तो हमारा P at position R क्या हो जाएगा? Pi जो है that implies Pi is equal to 0. Therefore, G capital M small m upon R is equal to minus PEF. Is that okay? This also means PE final is equal to minus GMM by R. Potential energy as a function of R will be minus GMM by small r. ठीक है? Potential energy as a function of R. तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh जो हम देखते हैं तो पॉजिटिव तो कभी होता ही नहीं है, तो पहली चीज वो हमेशा निगेटिव रहता है। ठीक है, निगेटिव का डिफरेंस बेसिकली हम लेते हैं, दैट कम्स आउट दैट इक्वल्स टू mgh। वो डेरिवेशन करेंगे, पूरी करेंगे। The potential energy at point P when the mass small m is brought from infinity to point P, the potential energy of capital M and small m is minus G capital M small m upon small r. R is the separation between. ठीक है, अब ओनली पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो ओनली पोटेंशियल क्या होता है? It has same, it bears same relationship as force and field has. ठीक है, the similar relationship potential and potential energy have. So gravitational potential at a point is defined gravitational potential. देखो
पोटेंशियल v से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर भी v ही रहता है। अब चीज ये है कि अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करने के लिए हमको बोला गया है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों यूज होने का, तो फिर हम सबस्क्रिप्ट वीजी एंड वी डालते हैं, अदरवाइज नहीं डालते हैं। ठीक है, ओनली वी। इज दैट ओके? सो वी और वी जी, क्लियर है? Rare of the rarest that both are going to come in a single question for you guys, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक है, एडवांस के अलावा ऐसा अजूबा चीज कोई और फ्रेम करेगा नहीं, तो वी हैव टू बी एट पीस। नो इश्यूज, हमेशा एक को ही यूज करना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और हर तरह के पोटेंशियल को वी ही बोलते हैं until unless हर एक साथ हो, तो फिर उनका सबस्क्रिप्ट डालते हैं। तीन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशन। तो वीजी, वीई एंड वी। मैग्नेटिक के लिए एम डालते हैं। ठीक है, क्या हुआ? द पोटेंशियल एनर्जी stored in a system consisting of, अबे यार। थैंक यू। कुछ तो हो गया। Consisting of mass, capital M, and unit mass when, ठीक है, बस इतना है। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन हो सकता है, अगर हम वर्क डन के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश, so it is going to be the work done when we try to displace a unit mass from infinity to point P under the influence of gravitational force of gravitational force of ये, और gravitational force due to mass capital। ठीक है, तो work done bring
and bring in for unit mass from infinity to point P under influence of gravitational pull. Capital. Again, this is going to be gravitational potential. So from this, we can say that we will be simply E as a function of R will be small m into V as a function of theta. ये V क्या है? Potential और gravitational potential. Gravitational potential at distance r from point mass capital M. That implies R is equal to P R upon small m, that is minus G capital M upon R. Is that okay? Yeah. चाहिए तो ए आर और फिर एक और एम लिख लो, फिर इसको कैंसिल कर लिया जाएगा, ठीक है, और फिर फाइनल आंसर लिख लेंगे. वर्क एनर्जी थ्योरम से gravitational field will be equal to minus dvdr. Is that okay? dv vector will be equal to minus dvdr and fg vector is equal to minus d d upon d. Noted. Next thing is दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करो.
स्मॉल एम से दोनों तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो EG will become FG and DV will become PR. ठीक है। हम्म, एक एक और कैरेक्टरिस्टिक characteristic of gravitational field. ग्रेविटेशनल फील्ड का नेचर कैसा होगा? जैसे वहां पे क्या क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलेगा और निगेटिव पर, हाँ, निगेटिव पर आकर के कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली मैग्नेट में नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल पर आके कन्वर्ज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड यूज टू बी अ क्लोज लूप। अंदर में भी मैग्नेट के जाता है, ठीक है, बाहर में नॉर्थ टू साउथ जाता है और अंदर में साउथ टू नॉर्थ जाता है। चार्जेस जो थे वो क्या थे, उनका फील्ड जो था दे वर नॉट कन्वर्ट, दे वर नॉट ये ये सॉरी, they are not continuous lines. Continuous matlab they are not going to start from same place and going to converge at the same place. They will start from positive charge and will converge at negative charge, which is going to be placed anywhere. मैग्नेट में हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। उस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या है, इट इज ऑलवेज अ कन्वर्जिंग, it is going to converge at a given mass. The field due to that mass is always going to be converging at that mass. ठीक है, it is always attractive in nature. जाते हैं। हाँ। हम्म। हम्म।
नहीं नहीं अभी है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये डेरिवेशंस है जो है, उसके बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद दो चीजें डिफरेंट, दैट विल गेट ओवर। हम सब सब कर लेंगे, सब कर लेंगे, आज शाम को सब कर लेंगे। ठीक है। The direction of gravitational field intensity is always tangential to the gravitational field lines. The gravitational field lines are always normal to the equipotential surface developed due to any mass. ठीक है, ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस का एंड फील्ड इंटेंसिटी रिलेटेड। एक्चुअली यहाँ पे वर्ड लाइन से डाल दो ना, सॉरी। हेलो, हेलो। हाँ किया था, हमने बाद में बात। हम्म, करनी है इसमें, करेक्ट करने के लिए gravity due to any mass do not intersect at any point। अब यहाँ पर बेसिकली टू डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ड्यू टू एनी मास डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम।